स्ट्रॉन्ग आदमी वो है जो अपने एक्शंस पर कंट्रोल कर सकता है, सिचुएशंस पर कंट्रोल कर सकता है, इमोशनली, फाइनेंशियली और फिजिकली। सो क्या चीजें चाहिए आपको एक स्ट्रॉन्ग और रियल आदमी बनने के लिए? तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विनीत रंजन। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है अनलॉक योर पोटेंशियल। और आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू बी अ रियल स्ट्रॉन्ग मैन के बारे में। तो उससे पहले हम जान लेते हैं व्हाट इज मैस्कुलिनिटी। मैस्कुलिनिटी का मतलब है आप अपने आसपास या फ्रेंड्स फैमिली को प्रोटेक्ट और प्रोवाइड करा सकते हैं। दो चीजें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटेक्शन से मतलब है आप उनको फिजिकली, इमोशनली और मेंटली प्रोटेक्ट कर सकते हैं। फिजिकली किसी भी थ्रेट से, इमोशनली आप उनको इमोशनल सपोर्ट दे सकते हैं, बता सकते हैं कि हौसला दे सकते हैं कि नहीं कुछ नहीं होगा, वी कैन डू दिस थिंग। प्रोवाइड करने का मतलब है आप उनको फाइनेंशियली प्रोवाइड करा सकते हैं जो जो चीजें उन्हें चाहिए टू ग्रो इन लाइफ। नाउ हम बात करेंगे प्रोटेक्ट आप करेंगे कैसे उन्हें। सो प्रोटेक्ट करने के लिए आपके पास कुछ स्किल्स होने चाहिए, फिटनेस लेवल होनी चाहिए और स्ट्रेंथ होनी चाहिए। अब यहां प्रोटेक्शन बात कर रहे हैं फिजिकल थ्रेट से अगेंस्ट। So to fight against physical threat, you need to have some sort of tactical advantage. And to have that tactical advantage, you need to either have some sort of martial arts skills or some sort of military training or either some concept of security. And now to sustain these things, you need to have a good fitness level. And it is very important to go and train. And now आजकल मैं क्या देख रहा हूं, काफी लड़के हैं जिनके फिटनेस लेवल इतने बेकार हैं कि दे कांट इवन वॉक फॉर 10 मिनट्स। फॉरगेट अबाउट फाइटिंग, बिकॉज एज अ मैन, व्हेन आई टॉक अबाउट बीइंग अ मैन और अ मैस्कुलिन एनर्जी, वी आर ऑलवेज कंपीटिंग, ऑलवेज। इवन इफ वी आर टॉकिंग टू समवन, वी आर कंपीटिंग, वी वांट डोमिनेंस। हाउ यू वुड अचीव डोमिनेंस? एंड अब ये समझो, यू आर देयर आउट देयर इन द पब्लिक और आप अपनी फ्रेंड्स फैमिली के साथ हो। सडनली अ थ्रेट अराइव्स, आपके फिटनेस लेवल इतने गए गुजरे हैं कि आप 10 मिनट वॉक नहीं कर पा रहे। आप कैसे प्रोटेक्ट कराओगे? यू कांट प्रोटेक्ट, यू विल लूज द गेम ओवर देयर। एंड पीपल डोंट लाइक लूजर्स। एंड इफ यू डोंट वांट टू बी अ लूजर, गो एंड ट्रेन, ईदर ट्रेन फिटनेस, मार्शल आर्ट। इफ यू कैन ट्रेन बोथ, गुड। बिकॉज अंडरस्टैंड वन थिंग, if you're there out there in the public, you have to fight if there is a chance. And now these days I see people, they are scared. They are scared as anything. They are scared to talk. They are scared to express themselves. They are scared to put their opinion out there because they are afraid of getting involved into fight. यार तुम वर्बल फाइट से डर रहे हो तो तुम फिजिकल फाइट तो बहुत दूर की बात है। Understand one thing, being a man, it is very important that you are not go out there to impress each and everyone. You need to have your point and you need to stand by it. And एक बहुत जरूरी बात है इसमें, आपको एग्रेसिव होना पड़ेगा। पर एग्रेसिव होने का मतलब यह है कि you have to have a controlled aggression. आपको अपने इमोशनल और फिजिकल एक्शंस पे कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। यू कैन गो आउटसाइड एंड स्टार्ट गेटिंग इनटू फाइट। नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट गो आउटसाइड एंड गेट इनटू फाइट। व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज यू नीड टू गो आउटसाइड एंड स्टैंड फॉर योर सेल्फ। व्हाट आई मीन बाय दैट, if there is a fight, you have to go stand there. You can't run from the situation. You have to take the situation, take charge of it, control the situation. और कंट्रोल कैसे करोगे? जब कोई ट्रेनिंग होगी, जब फिटनेस लेवल अच्छे होंगे, तभी कर पाओगे, राइट? नाउ सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज प्रोवाइड। प्रोवाइड से सीधा मतलब है, इफ यू कैन यू प्रोवाइड योर फैमिली फाइनेंशियली? अगर हाँ तो गुड, अगर ना तो यू नीड टू चेंज योर सेल्फ। भाई कहीं ना कहीं जाके नौकरी करनी पड़ेगी। यू हैव टू गो आउटसाइड एंड वर्क, यू हैव टू मेक मनी। नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, इफ यू आर अ मैन, यू विल बी ओनली रिस्पेक्टेड इफ यू मेक सम मनी and if you gives you the money back inside your home, और उसकी वजह से तुम्हारा घर चलता है। अदरवाइज पीपल विल नॉट रिस्पेक्ट यू, राइट?
नाउ आजकल की ट्रेंड की बात कर लेते हैं। आजकल ट्रेंड क्या चल रहा है? आजकल तो आदमी होना ही कैंसिल हुआ जा रहा है। आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी. Men are men and men are masculine, and I don't understand what is this toxic masculinity. As a man, we are go outside and have a strong opinion. We are go outside and protect us and family and provide for our family. So when we are going outside, हम इतना competition लड़ रहे हैं, कर रहे हैं. So we have some sort of dominance, and that's inheritance. वो हमारे अंदर है. So let's take it. If you are a man and you are protecting and providing your family, and you are having some set values and principle, और आप अपनी बाउंड्री सेट करते हो, भाई ये काम इस तरीके से होगा, इसके बाहर जाके नहीं होगा, तो ये टॉक्सिक कैसे हो जाएगा? हाउ कैन बी अ टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी? If I'm telling my family that you should behave in a certain way when you are out there in the public, आप ऐसे इसके बाहर जाके आप बिहेव नहीं कर सकते, बिकॉज इट्स एन थ्रेट. I'm a man, I go outside and see what is happening outside. I see from the male perspective. Now understand, most of the criminals are male. So most of the criminals are male, so somewhere we have a connection. Or being a male, I know कि सामने वाला तुम्हें किस नजर से देख रहा है. If I'm telling you not to wear small dresses, you should listen to it. And you should not be like, you are so toxic. It is not toxic, it is being realistic. So what I feel is that men or masculinity comes from the real experience, from the reality. However, what I feel that feminism and survives under the four wall which is protected by masculine energy. अगर masculine energy नहीं होगी तो feminism नहीं टिक पाएगा. Alright guys, do you agree? If you agree, please comment down. Even if you do not agree, आप comment down करो. हो सकता है मैं गलत हूँ. अगर मैं गलत हूँ तो भाई मुझे सही कर दो, comment करो. Alright, coming back to the topic. So now because of this cancelling culture also, कि बहुत सारे लोग जो हैं, जो खासकर जो male community है, they are like कि कुछ नहीं बोलना है किसी को. जस्ट डोंट से, बिकॉज यू विल बी कैंसल्ड. आपके ऊपर शेमिंग हो जाएगी. एवरीबडी वुड बी अगेंस्ट यू कि तुमने कैसे बोल दिया. नाउ आई टेल यू द रियलिटी. दिस सोसाइटी आई एम टॉकिंग अबाउट सोसाइटी विच इज रनिंग इनसाइड द प्लैनेट अर्थ. भाई इसके बाद प्लूटो में कुछ चल रहा तो उसके बारे में मुझे नहीं पता, पर प्लैनेट अर्थ में देयर आर जेंडर रोल्स. And men are supposed to protect and provide, and that's what they are protecting and providing from last decades. If you see the history, India की history देखो, 1962, 1965, 71, 99, every war, चाहे इंडो चाइना, इंडो पाकिस्तान, इंडो बांग्लादेश, इंडो श्रीलंका में ऑपरेशंस किसने लड़े हैं? फौज ने लड़े. फौज में कौन है? आदमी है. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि women do not have any sort of role in nation building. They have role and they have done a very good job. But what I'm saying, most protect कौन कर रहा है? देश चल के इस वजह से रहा है, वो फौज की वजह से चल रहा है. कल को अगर पाकिस्तान आगे हमला कर ले तो कौन लड़ेगा? फौज में आदमी है. क्या आप औरतों को भेज दोगे? क्या फेमिनिज्म चला जाएगा उसके अगेंस्ट लड़ने के लिए? क्या फेमिनिज्म सर्वाइव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा. Because there is a biological advantage that men have. So now you can call us toxic for being man, because that's how we are. It's our nature. एक और important चीज है कि most of the men these days do not have a male role model. Now what I mean from the perspective of male role model is that earlier we used to have this man. I want to be like this man. But now that this man is missing. It is not missing, basically it is being neglected, because बहुत सारे आदमी है भी हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं और जो एक एग्जाम्पल लीड बन रहे हैं. पर बिकॉज ये जो कल्चर चल गया ना कि तुम जो दिल में है सो कर सकते हो, यू कैन डू व्हाट यू फील लाइक,
you can cry anywhere and you can do this and that, Kana Dimkana, and you can be emotional for things. You can sit and cry. That's bullshit. That's totally useless and nonsense. As a man, the guys who are still struggling, they are alone. You ask any of the guy, you ask any of your friends, especially male friends who are there struggling, hustling, they are all alone. So you can't be emotional and start crying. If you will have an emotionally weak man, अगर आपके पास emotionally weak man होंगे, तो society will collapse, because the person who do not have control over his emotion, he will not be able to get success in his life, and eventually he will fall into the trap of drugs. He will start doing crimes. He will start, doing n number of crimes that you can think of. So do you want a man who is always crying, who do not have control over emotion? Who you want a man who is truly masculine, who can protect and provide, who can control his emotion and aggression in a controlled way? Alright, this is especially for the guys. If you want to protect and provide, if you want to be a strong man, you need to start training yourself. You need to start developing skills. You need to start working out. You need to start to get into a martial arts gym. You need to start to get into the fight, combat. You need to take competition. You need to fight. Take punch on your face, fall down, knock people down. I'm not talking go outside and fight. I'm talking about in the terms of competition, in the terms of becoming a strong and real man. Alright guys, this was all from my side, and thank you so much for watching this video. In case अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी और तड़कते भड़कते टॉपिक के साथ, जिस पर हम अगली बार फिर चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच।